Hey guys, welcome to my YouTube channel. Today we will learn chapter 6 of NCERT class 10 science book, that is life processes. Are you excited to learn something new? If not, tighten your seatbelts because this journey is going to be full of fun and knowledge gain. So in this chapter we would learn that the basic life processes, what does it mean, and we will also learn about maintenance functions of living organisms. So starting with our chapter, first of all the question arises, whenever we see something, how we come to know that the particular thing, the person or the animal is alive or not alive? How do we know that? So, as in this chapter, it's told, if we see a dog running, or a cow chewing cud, or a man shouting loudly on the street, we know that of these beings are alive. We know that, right? How do we know that? हमें कैसे पता चलता है कि ये सब जो डॉग भाग रहा है, काउ कट च्यू कर रही है, खाना खा रही है, कोई बंदा चिल्ला रहा है, तो वो सब एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. वो हमें इसीलिए पता चलता है क्योंकि हम देखते हैं कि वो ब्रीथ कर रहे हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट प्लांट्स जो हैं वो चिल्ला नहीं सकते, वो हमारे सामने कुछ खा नहीं सकते. हाउ डू वी नो कि वो अलाइव है या नहीं? तो कुछ लोग कहेंगे कि वो ग्रीन होते हैं, वो इसीलिए अलाइव हैं बिकॉज दे आर ग्रीन. But does it really necessary that a plant which is green is alive and the plant which is not green is not alive? There are many plants which are not green but yet they are alive. They are fresh. How? Because they grow over time. The plant वो भी तो ग्रो करते हैं ना. तो पहले वो छोटे से थे, फिर वो बड़े हो जाते हैं, फिर वो और बड़े हो जाते हैं, तो मतलब वो ग्रो कर रहे हैं. तो हम कह सकते हैं कि सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट विच इज आइदर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट ग्रोथ रिलेटेड. बट अगर हम किसी भी चीज की मूवमेंट देख रहे हैं कि जैसे कोई डॉग मूव कर रहा है, कोई काउ मूव कर रही है, या प्लांट्स है वो ग्रो कर रहे हैं टूवर्ड्स देयर शूट ग्रोथ, राइट, उनकी जो स्टेम है वो ग्रो करती है, तो अगर वो ग्रो कर रहे हैं तो दे आर अलाइव. So we can say, if a visible movement is observed, if there is a visible movement, we can define it as a characteristic of life. But it is not enough. There might be some things जिनको हम मूव करते हुए नहीं देख सकते, but वो still alive है. For example, viruses, bacteria, there are many living organisms जो कि बहुत ही छोटे हैं, but still we don't know if they are alive or not. So these types of living organisms are alive, but how do we determine if they are alive? Do we really need movements for it? No, we really cannot define the movements as a particular characteristic of life. So, as over here they have told that viruses do not show any molecular movement, or in fact our cellular growths which within a body, they are also we cannot see their movements, right, but they are alive. So how do we determine if a being is alive or not? So we will see here that why are molecular movements needed for life. We can see that there are classes that living organisms are well organized structures. They have tissues, they have cells, and many smaller components in them. Because of effects of environment, this organized, ordered nature of living organisms is very likely to break down over time. So, when we see that our living structures, because of effects of environment, there are many new growths, and old tissues, old cells, they break down and they grow up, and new cells and tissues are formed. If order breaks down, the organisms will no longer be alive. So the living creatures must keep repairing and maintaining their structures. तो जो living organisms हैं उनको अपने structures को break down होते हुए और फिर भी repair करते रहना पड़ता है, क्योंकि अगर वो एकदम से break down हो जाएंगे तो living organisms will die. But for the living organisms to maintain their life processes, they need to maintain their structures. So they need to go through repair, tear and down again and again. So let us explore what are the maintenance processes of living organisms. Now, the question arises, what are life processes? Life processes होती क्या है? So the maintenance functions of living organisms must go on when they are not doing anything particular. अब जैसे कि अगर हम बैठे हैं तो भी हमारा हार्ट बीट तो चल ही रहा है, हमारा वो ब्लड पंप तो कर ही रहा है, हमारी बॉडी में डाइजेशन तो हो ही रही है. अगर हम इवन इफ वी आर स्लीपिंग, या फिर हम ऐसे ही बैठे हैं, या फिर हम कुछ काम कर रहे हैं, तो भी हमारे जो बॉडी के इंटरनल मेंटेनेंस फंक्शंस हैं वो खुद ब खुद होते जा रहे हैं. We are not doing anything for them. So how does this go on? It is what is called life processes.
ये जो लाइफ के प्रोसेसेस है, द मेंटेनेंस फंक्शंस व्हिच गो ऑन बाय देम आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस. नाउ इट्स डेफिनेशन. Let me just select a different color highlighter. Yes. The processes which together perform this maintenance job are called life processes. Which maintenance job? The maintenance functions of living organisms must go on when they are not doing anything in particular. For example, for yeah, for example, heart pumps blood, and what more? Like whenever we are sleeping, even then digestion is taking place. What is digestion? We'll study it ahead, but there are certain kind of things that go on even when we are sitting idle. तो उन सब चीजों को हम क्या कहते हैं? Life processes. Now, since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them. क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि हमारी जो बॉडी है वो वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स से बनी हुई है, जो कि है टिश्यूज में सेल्स होते हैं, सेल्स में और भी स्मॉलर कंपोनेंट्स होते हैं, और क्योंकि उनमें ब्रेकडाउन्स, वियर, टीयर और फिर उनका रिपेयर होता रहता है, सो दिस कैन नॉट गो ऑन फ्रीली, राइट. उसके लिए कुछ एनर्जी चाहिए होगी. तो वो जो एनर्जी है उस एनर्जी को ही मतलब ब्रेक डाउन करने के प्रिवेंट फ्रॉम जो हमारी ये प्रोसेसेस है वो क्यों होती है? टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन. तो फिर उसके लिए एक एनर्जी चाहिए होती है. तो दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. ओके, दिस एनर्जी comes from outside the body of the individual organism. So there must be a process to transfer a source energy from outside the body of the organism, and this process of transfer of source energy from outside the body of living organism is called nutrition. For example, जो हम लोग हैं, हम खाना खाते हैं तो हम कुछ भी खा रहे हैं, व्हीट फ्लोर से चपाती या कुछ दाल्स, कुछ सीरियल्स या समथिंग. सो दैट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी आउटसाइड ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. वो हमें आउटसाइड से मिलती है जो कि हम कंज्यूम करते हैं टू प्रोवाइड आर इनर ऑर्गन्स द एनर्जी नीडेड फॉर द वियर एंड टियर एंड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेकडाउन. सो let us go ahead. So this energy is not only provided for the repair but also to prevent the breakdown. क्योंकि अगर उनको एनर्जी नहीं मिलेंगी एंड दे आर मतलब वो 24 आवर्स लगे हुए हैं अपने हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, वो काम करते रहते हैं, तो उसको प्रिवेंट भी करना होता है फॉर फ्रॉम डैमेज एंड ब्रेकडाउन. तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए. Now we can say that since life on earth depends on carbon based molecules, most of these food sources are also carbon based. So जैसे कि कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर में पढ़ा था कि कार्बन इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट. It is very important as it forms a lot of compounds and all the living organisms on this earth are carbon based. वो कार्बन बेस्ड है, तो जो हमारे फूड सोर्सेज है वो भी कार्बन बेस्ड है. Now, depending on the complexity of carbon sources, different organisms can use different kinds of nutritional processes. Carbon food sources can be complex, तो जो nutritional processes है वो भी हर organism में different type के होते हैं. Just giving an overview of it. For example, जो हम हैं human beings, we cannot digest the unprocessed food like we cannot like जो हमारी काउज है और बफलो है वो उनको हम ग्रास वो देते हैं तो वो खा लेते हैं, जो काउज और हमारी जो भी अदर जो हमारी ruminants हैं. बट वी एज ह्यूमन बींग्स वी कैन नॉट कंज्यूम दैट. वी कंज्यूम सम अदर काइंड ऑफ फूड लाइक प्रोसेस्ड फ्लोर, वी सीरियल्स एंड मेनी अदर काइंड ऑफ फूड. वाई इज इट सो? बिकॉज जो कॉम्प्लेक्सिटी है ऑफ कार्बन बेस्ड सोर्सेज, उसको डाइजेशन के लिए हमारी बॉडी का जो फंक्शनिंग है वो डिफरेंट है देन दोज एनिमल्स. सो हमारे हर तरह के एनिमल्स की जो बॉडी की फंक्शनिंग है टू ब्रेक डाउन दोज कॉम्प्लेक्स कार्बन सोर्सेज इनटू दी सिंपलर वंस वो डिफर करती है. तो उसी के कारण जो हमारे फंक्शंस हैं वो भी डिफर करते हैं. तो उसी कारण के अकॉर्डिंग हमारा जो फूड है वो भी डिफर करता है दैट वी ईट. Now, we have seen that sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body and must be finally converted into uniform source of energy. जो हमारे food sources है उनको भी आगे break down करना पड़ता है to convert them into uniform source of energy. We as human beings, हमारा जो food source है, let me just type it here. हमारा जो फूड सोर्स है
उससे जो हमारी एनर्जी है वो ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। तो सिमिलरली जो हम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है लाइक इन प्लांट्स, वो भी जो फूड सोर्स है उनका उससे कन्वर्ट होकर वो ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज एंड अदर जो हमारे सिंपलर मॉलिक्यूल्स है उसमें कन्वर्ट होती है। तो उसके लिए भी एक प्रोसेस चाहिए होगा। सो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर रिस्पॉन्सिबल टू फॉर ब्रेकिंग दीज केमिकल एंड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। ओके, इट इज ओवर हियर, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शंस. Now, the process of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of sources of cellular needs is called respiration. Now, in this process of breakdown of food, oxygen is also required. So, the process of acquiring oxygen from outside the body is called respiration. We will be studying all these processes in detail in the further lectures. So, this is just an overview of all of them. In case of single-celled organisms, no specific organs for taking in food, exchange of gases, or removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. So, single-celled organisms like amoeba, etc., they're just a single-celled organism, so they do not have many different organs and complex organs. So, they do these processes in a basic manner by just a single cell. But in multicellular organisms like human beings, हमारे पास डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं और organs होते हैं to perform different kinds of these processes. Simple diffusion will not meet the requirements of all the cells in multicellular organisms, but जो single celled organisms है उनमें ये सारे processes diffusion से हो जाते हैं. Now coming further, we would say that the uptake of food and oxygen hai, it will also be the function of specialized tissues in multicellular organisms. We will learn about all of this in the coming lectures. So just going ahead, I would just quickly cover this point. Byproducts that are not useless from cells of the body, they are excreted from our body, they are removed from our body by the process called excretion. And now coming to these questions, the first question says, why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirements of multicellular organisms like humans? So, diffusion is insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organisms like us human beings or animals because all the cells of human beings are not in direct contact of the environment. जो हमारे जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो सेल है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता है ऑफ एनवायरमेंट. सो डिफ्यूजन इज द मेन सोर्स ऑफ मीटिंग देयर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट of organisms that are single celled like amoeba etc. But we as humans, हमारे जो cells है we are multicellular, तो हमारे cells direct contact में नहीं है of environment. So and diffusion is a very slow process. Okay, so it has 2 points. First, our cells are not in direct contact of environment. Second, diffusion is a very slow process and it will be very slow for multicellular organisms to meet their oxygen requirements by diffusion. Second, what criteria do we use to decide whether something is alive or not? As we have already seen it above, any visible movement such as walking, breathing or growing, walking and breathing like in all of the organisms like animals, humans, we see them as movements, and growing also in humans like we grow in our height, and in plants they also grow by their shoot. We can say that some kind of such movement helps us determine if something is alive. But we can also say that there are some living organisms we cannot see their movement by our naked eyes, but yet they are alive. For example, the cellular movements, their growths, etc. Now coming to third question, what are outside raw materials used by an organism? For organisms like human beings and animals, oxygen, water and food are examples of external raw materials used by organisms. And for living organisms that are plants, they obtain their raw materials from the environment in the form of carbon dioxide, water and sunlight. Okay. What processes would you consider essential for maintaining life? There are many processes that are essential for maintaining life like nutrition, respiration, transportation, excretion and many more processes that we are going to learn in this chapter.